Hi everyone, this is Vivan and you're tuned into VivanLive. The show's name is Crypto Gyan, and in today's video I'm going to teach you how to make quick money without IDO allocation. In my previous videos I've already taught you what is an IDO, how to get an allocation, how to get a short allocation, how to convert $500 to $50,000. But in this video I'm going to teach you, even if you don't have an IDO allocation, how can you make money? Before we get started, let me tell you that I'm not a financial advisor. This is something that I have done personally, and this strategy has worked well for me. So I'm just sharing this with you. It's not important that this would work for you. Any loss that you would incur wouldn't be my responsibility. Any profit that you incur wouldn't come to me. So make sure you're doing your own research before investing. So let's get started. So if you know how an IDO works, basically if you get an IDO allocation for say suppose $500, whenever the launch of that crypto token happens, you don't get 100% of it. Most of the times you don't get 100% of it. There's something called as vesting. Vesting इसलिए होता है जहाँ पे आपके tokens unlock हो जाते हैं. For example, $500 के आपने अप्लाई किए allocation के लिए, you won't get $500 तुरंत, right? $500 वो tokens तुरंत unlock नहीं होंगे, क्योंकि अगर तुरंत unlock होंगे तो आप तुरंत उसको dump कर दोगे. So ये projects क्या करते हैं, यहाँ पे एक timer लगा देते हैं कि हर महीना इतना इतना unlock होगा, या मे बी after the first month 50% unlock होगा, and so on. हर एक project का different होता है. So the strategy is very simple. वेस्टिंग पीरियड जब खत्म होता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्रिप्टो टोकन का कब खत्म हो रहा है. आपको उस टाइम पे उस टोकन को शॉर्ट कर देना है. सो व्हेन इट कम्स टू पोलका स्टार्टर इकोसिस्टम, आई हैव चेक दिस कि जब जब टोकन अनलॉक होता है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट मिनिमम 50%, टोकन की प्राइस विद इन 3-4 आवर्स फॉल्स बाय 10%. सो इफ यू आर शॉर्टिंग दैट टोकन बाय 10x leverage, you are easily making 100% profits in a few hours. What are the things that you have to look here is, जो टोकन अनलॉक हो रहा है वो 50% तक तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत 10% हो रहा है, कुछ टोकन्स होते हैं जो कि 10% होते रहते हैं हर महीने, तो उसमें जो फॉल है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ द टोकन जो कि लॉन्च किया गया था आईडीओ में उसकी सेलिंग हो रही है, राइट. सो दी हायर दी अनलॉक दी बेटर इट इज. सो आपको इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है. आई जस्ट पुट अ स्क्रीनशॉट हियर कि पोलका स्टार्टर पे आप कहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कब वेस्टिंग पीरियड का स्केड्यूल क्या है, वो सब चेक कर सकते हैं. सेकेंड चीज़, यू नीड टू नो कि उस पेयर का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डी ट्रैवल का दिखा रहा हूँ आपको. सो डी ट्रैवल का MXC एक्सचेंज पे फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसका कॉन्ट्रैक्ट होना, बिकॉज अगर फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो देयर इज नो वे दैट यू कुड शॉर्ट सेल दैट token. So this is a very easy way of making quick money within a few minutes, within a few hours. I have put some of my trades here जो कि मैंने D travel को मैंने short किया था and made good returns in few hours. Yes, stop loss भी था मेरे पास. I put 2% का stop loss. So if I would have made a loss, I've made a loss of 20%. एंड मैंने ज़्यादा पैसे से नहीं किया था. आई यूज ओनली दैट मनी विच आई कुड अफोर्ड टू लूज, बिकॉज दीज थिंग्स कैन बी रियली रिस्की. आई हैव एक्चुअली बैक tested a lot of tokens on Polka Starter ecosystem. I have seen that at least 10% से गिरता है. So आपका रिसर्च इसी पे होना चाहिए कि हर एक लॉन्च पैड पे कौन से टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं, उन टोकन्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, और अगर है तो वो कितने परसेंटेज से गिर रहे हैं. सो वंस यू हैव अ बैकडेटेड डाटा, इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू टेक अ डिसीजन एंड you wouldn't be that panicky, right? So that's pretty much it. This is Vivan signing off. I hope you like this video. It's a really easy way of making money, because you already know that the unlock is happening, price will go down because people are gonna sell. So it's pretty straightforward, right? That's pretty much it. This is Vivan signing off. I hope you like this video. Please do subscribe to this channel, and I'll see you in the next video. Bye bye.